Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will continue from where we have left. So last time हम लोगों ने सिग्नल मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम सिग्नल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. So let's suppose we have signal x of n, okay, and this is, let's suppose this is x1 of n, and this is this signal, okay. This is -1, 0, 1, 2, 3. This is 1, 2, 1, 3, and 2. Let's suppose this is x1 of n. Now this will be x2 of n. Let's suppose x2 of n is equal to 0, 1, and let's suppose this is 4, 1, 2, 1. Now we have to find y of n is equal to x1 of n plus x2 of n. Okay, so this is just a sample by sample addition. So what do we mean by sample addition? We have to draw this y of n, okay. This is -1, 0, यहाँ के पास 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5. अब ये देखिए -1 पे ये 1 है और ये -1 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा. अब 0 पे this signal is 2 and this signal is 1, so this will become 3. 1 पे this is 1 and this is 2, so it will become 3. इसी तरह 2 पे this signal is 3 एंड 3 पे ये सिग्नल जो है 2 है और जो दूसरा सिग्नल है ये 0 है, और इसी तरह 4 पे, तो दिस इज x1 प्लस x2n. ठीक है, सो x1 प्लस x2n जब आप दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को ऐड करते हैं तो आप जो सैंपल बाय सैंपल एडिशन करते हैं. ठीक है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो सब्ट्रैक्शन होगी वो भी सैंपल बाय सैंपल सब्ट्रैक्शन होगी. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लिकेशन होगी. यानी आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे दो सिग्नल्स के ऊपर, तो वो आपके पास सैंपल बाय सैंपल ऑपरेशन होगी. ठीक है, अच्छा, तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स भी पढ़ लिया. उसके बाद हमने डिफरेंट सिग्नल ऑपरेशंस जो है वो भी हमने देख लिए कि दो सिग्नल्स को ऐड कैसे करना है. और उसके अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. ठीक है, सो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जो है ये आपके पास ऐसे सिस्टम्स है जिसको आप एक इनपुट देते हैं x ऑफ n. ठीक है, ये इनपुट आप देते हैं अपने डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. सो दिस इज योर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड दिस इज योर आउटपुट. ठीक है, आप अपने सिस्टम को इनपुट देते हैं और आप उससे आउटपुट लेते हैं, लेकिन इस सिस्टम का काम जो है, इस सिस्टम ने इस सिग्नल को प्रोसेस करना है. ठीक है, अब ये जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये इनपुट आप इस सिस्टम को देते हैं और ये प्रोसेसिंग जो है ये प्रोसेसिंग आप फाइंड कर सकते हैं
by comparing input and output signal. So let's suppose we have a signal. Let's suppose ठीक है let's suppose we have x up in this is a system and the output y up in is equal to x up n minus 1. So actually what does it do कि आप इस सिस्टम को एक सिग्नल देते हैं x up in और वो ये आपका जो सिस्टम है वो आपके इनपुट को बाय 1 यूनिट डिले कर देता है. ठीक है तो इस सिस्टम का प्रोसेसिंग क्या है एक्चुअली ये आपके इनपुट सिग्नल को डिले कर रहा है. आपने इसको x ऑफ n दिया इसने आउटपुट पे आपको क्या दिया x ऑफ n माइनस 1 दिया. तो इसने क्या किया इसने आपके इनपुट सिग्नल को प्रोसेस किया यानी उसमें डिले इंट्रोड्यूस करवा दिया. ठीक है सो ये आपके पास एक डिले सिस्टम है. ठीक है इसी तरह यू हैव अ सिस्टम let's suppose you have a system where your input is x of n and what is your output? Your output is 1/3 x of n plus 1 plus x of n plus x of n minus 1. So what does it mean? इसका क्या मतलब है? It's mean कि आपका जो सिस्टम है ठीक है it depends on x of n also. ठीक है now what is x of n? X of n is this is 0 1 2 this is 1 this is 2 this is 3. So what does actually your system do? आपका सिस्टम का जो आउटपुट होगा y ऑफ n वो क्या होगा ठीक है so this is very simple what you have to do x of n is given you have to find x of n plus 1 so if x of n is equal to ये आपके पास x of n है 0 1 2 this is 1 2 1 1 amplitude 2 and amplitude 1. So what will be x of n plus 1? This will be your x of n plus 1. Minus 1 0 1 and what will be your x of n minus 1? So this will be your x of n minus 1. This will be 1 2 3 1 2 1
1 2 1। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं एक्स आप एन प्लस वन एक्स आप एन माइनस वन। ये इससे पहले जो लेक्चर था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था टाइम मैनिपुलेशन के बारे में। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट। एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन कि हमारा आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सो अब यहां पे देखें कि आप सबसे पहले इन तीनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड करें। ठीक है, सो सबसे कम जो n है, n की सबसे लो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो n -1 से स्टार्ट होगा। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, n की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 तक आएगा। ठीक है, तो -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो अब -1 पे देखें, -1 पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1, इसका भी -1 पे नहीं है, इसका भी -1 पे नहीं है, इसके बाद 0, सो 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका 1 है, तो इट विल बिकम्स 3। ओके, नाउ इसके बाद 1, सो 1 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, सो इट विल बिकम 3। अभी बारी है 2 की, तो 2 पे इसका एम्पलीट्यूड 2 है और इसका एम्पलीट्यूड 1 है, सो दिस विल बी 3, और 3 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, नाउ आफ्टर एडिंग दीज 3 सिग्नल्स यू हैव टू डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बिकम 1 बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, 3 डिवाइड बाय 3 1, 3 divided by 3 1, and this will become 1 or 3. So it's mean this is your output y of n। यानी अगर आप इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, अगर आप इसको ये सिग्नल देते हैं x ऑफ n, ठीक है, तो आपको ये आउटपुट देगा ये वाला। ठीक है, सो ये आपका जो सिस्टम है ये आपके सिग्नल को प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, और सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या है, ये भी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो now let's suppose we have a system y of n is equal to summation of, let's suppose k is equal to 0 to 4 x of k। okay, so we can write this system as x of
n माइनस के। ओके, सो हम लिख सकते हैं y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस वन प्लस x ऑफ n माइनस टू प्लस x ऑफ n माइनस थ्री plus x of n minus 4. So actually what does this system do? This system is actually an accumulator. Okay, what does it mean by an accumulator? Actually आपका ये जो सिस्टम है ये आपके प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है, और पास्ट वैल्यूज को सम अप करता है, ठीक है। यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4, यानी हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपके इनपुट को क्या करता है, प्रीवियस के साथ ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली एन accumulator system, ठीक है। सो नाउ if the input to this accumulator system is, if the input to this accumulator system is what? Now let's suppose we have this accumulator system. This is example 2.2.2. Okay, so now let's suppose x of n is equal to n u of n. Okay, so what will happen? We have to find y of n when y of minus 1 equal to 0, y of minus 1 equal to 1. So इसका मतलब क्या है ये मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। And what is y of n is equal to summation k equal to minus infinity to n x of k. Okay, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ये इनपुट है, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट है, तो आप इस सिस्टम का आउटपुट जो है वो आप कंप्यूट करें, ठीक है। कब कंप्यूट करें? जब इनिशियली सिस्टम में, देखिए अक्यूमुलेटर क्या करता है, अक्यूमुलेटर आपके प्रेजेंट वैल्यूज को, ठीक है, और पास्ट जो सैंपल्स है, ठीक है, उसका रनिंग सम आपको कंप्यूट करके देता है। ये अक्यूमुलेटर का काम है। अब यहां पे देखिए कि ये इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 x ऑफ k प्लस k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ k। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। मैंने इसके रेंज को, सॉरी दिस इज n, मैंने इसके रेंज को क्या किया, इसके रेंज को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब जब इसके रेंज को मैंने क्यों स्प्लिट किया, उसका रीजन ये है कि इसका जो समेशन है पॉसिबल है। दूसरा ये है कि वी आर गिवन इनिशियल कंडीशन, यानी एट n इज इक्वल टू -1, यानी -1 और उससे जो पास्ट सैंपल्स थे वो क्या है, उस पे आउटपुट क्या है, 0 है पहले केस में, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए कि ये जो रेंज है ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, और ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एट इज इक्वल टू -1, प्रीवियस पास्ट सैंपल क्या है, 0 है। तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, यहाँ पे 0 लगा दूंगा, प्लस समेशन k इक्वल टू 0 टू n, एक साथ k की जगह में क्या लगाऊंगा, n, और u ऑफ n, तो u ऑफ n क्या है एक्चुअली, u ऑफ n इज दिस सिग्नल, ठीक है। u ऑफ n इज दिस सिग्नल, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका एम्पलीट्यूड 1 है, क्या है, 1 है। तो अगर किसी चीज के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो उस पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। और चूंकि इसका रेंज जो है ये k से लेकर 0 से n तक है, तो इस वजह से ये u ऑफ n जो है ये भी इस केस में सिर्फ इस रेंज तक मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि इज इक्वल टू 0 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n और n, ठीक है, n एंड व्हाट, u ऑफ n। नाउ लेट्स सपोज, अब देखिए ये हमारे पास क्या किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है n टू n प्लस 1, n टू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। कैसे, लेट सपोज n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि समेशन, इसको स्प्लिट करें, दिस इज, इसको मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। n इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि ये क्या करेगा, जब यहां आप n इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो इट्स मीन, n इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो इट्स मीन के क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने 4 से पहले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उन सबको ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहां इस फार्मूले में आप इन 4 पुट करें, सो 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो आपका ये समेशन जो है ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। अब अगर आप लोगों के पास इनिशियल कंडीशन जो है 1 है तो फिर क्या होगा, फिर भी आपके पास ये आंसर होगा, लेकिन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशन, दैट व्हाट इनिशियल कंडीशन यू हैव गिवन, उसके मुताबिक आप लोगों ने फिर क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को अगर आप कोई डिस्क्रीट इनपुट देता है तो वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक डिस्क्रीट टाइम आउटपुट देगा, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्क्रीट टाइप्स, जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन, कि हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, ठीक है। सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, एक्चुअली वी हैव ब्लॉक डायग्राम नोटेशंस, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज we have a system y of n is equal to x1 of n plus x2 of n,
Okay. So how this system can be represented? The system can be represented through an adder. यहाँ पे क्या होगा? This will be an adder. Okay. This will be x1 up n. This will be x2 up n. And this will be your y up n. So this is the representation of this simple system. This is an adder. Now, if let's suppose you have a system that is a constant multiplier. Let's suppose you have a system y of n is equal to a x of n. So how we will represent this system? This system will be represented by an arrow a. This is x of n and this is what? Y of n, which is actually a x of n. So this is your input. When this input multiplies with this constant, so this will becomes your output. Now we are studying about the basic building blocks of a discrete time system. In next section, we will utilize these basic building blocks in order to model a complex discrete time system. Okay? So this is how a multiplier can be modeled. Okay? Now, signal multiplier. सिग्नल मल्टीप्लायर में क्या होगा कि लेट्स सपोज you have a system which input is x1 of n multiplied by x2 of n. So how do we represent this? This is a multiplier. This is x1 of n. This is x2 of n. And this is your output y1 y of n. Okay. So these was all about the basic building blocks of discrete time system. Now, how we will represent a unit delay system? What do we mean by a unit delay system? Let's suppose we have a system y of n is equal to x of n minus 1. So we will have x of n, z minus 1, and this will be our y of n. Okay. So here the delay is only 1 unit, so the z power will be only minus 1. Okay. Now let's suppose we have y of n is equal to a x of n minus 3. So how we will model it? This is the system modeling z minus 3. A is also multiplied. This is x of n and this will be your y of n. Okay. So this is the constant multiplier and this is the delay. Now what will happen if the delay, if it is a time advance? For example, if we have y of n is equal to x of n plus 2. So actually this will be x of n, this will be x of n plus 2. So this will be y of n. So
Here the delay will be z squared. What will be the delay? It will be the z squared. Because here the time is positive in plus 2, so that is why we will have a z square, and here is minus 1, so that is why z power minus 1 minus 3 z power minus 3. So this was all about how to represent some basic systems. The basic systems, how to perform, how to model an adder, how to model a constant multiplier. This is actually a constant multiplier. Okay. How to model signal multiplier, how to model how to model time advance system, how to model time delay systems. Okay. Now using this concept, we have to model some basic building blocks. Okay. So now we have an example